चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो कि एक मेकअप लुक है। तो आज मैंने वियर किया है साड़ी, तो सोचा थोड़ा सा एक मेकअप लुक बनाती हूँ। और आज इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी, आप लोग देख सकते हो ये पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत मुश्किल से मेकअप किया है मैंने। आई होप आप लोग को ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा होगा। अभी मैंने बालों को जुड़ा किया हुआ है। मुझे बाल बनाने नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है बाल बनाना। तो अभी मैंने जुड़ा कर रखा है। तो आप लोग बताइएगा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चराइज़र लग चुका है मेरा, और मॉइस्चराइज़र के बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर मेरा वही NYB का है। प्राइमर लग चुका है। तो अब फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिविया का लिक्विड फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है नेचुरल ग्लो, 2 नंबर है ये। जो आप लोग फाउंडेशन इंग्लिश से मैंने अपने हाथों से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो गया है। और ब्राउनी कंसीलर, फर्स्ट टाइम कोई कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड कंसीलर। ये है मेबलिन का। इसे भी फिंगर की मदद से करके और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, जो कि मेबलिन फिफ्टी का है। अब बारी है आई शेडो की, और आई शेडो के लिए मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का न्यूड आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं लाइट पिंक कलर लेके और अपने आँखों पे अच्छे से क्रीम बनाऊंगी, ब्लेंड करूँगी। तो मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है। आई शेडो पैलेट से ये जो है ऑरेंज टाइप शेड है, बट इस पे नाम प्ले लिखा हुआ है। इस कलर को लेके मैं थोड़ा सा आई शेडो पैलेट से कर रही हूँ ऑरेंज।
होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक